Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Ati Sharma and you are watching the Sharma G. So आज हम क्या करने वाले हैं any guesses? As if I don't know. Obviously you know. So today we are playing detective. तो हम आज एक ठो मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं जिसमें बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स है. एंड इफ यू वांट टू नो कि हम कहाँ से ये सब कर रहे हैं देन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लास्ट में हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ से ये सब कर रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. Let's start. So let's start. The case of a silent ledger. The rain had not stopped for 3 days in Darvapur, a city where secrets dissolved slowly like ink in water but never fully disappeared. Very interesting, right? Actually हम दोनों को ही नहीं पता कि what is there in this story. मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि I wanted to like कि देखते हैं, मेरा reaction raw होना चाहिए वीडियो पे. उसके बाद Inspector Arvind Rao stood by the window of his office, watching the street lamps flicker in the storm. On his desk lay a leather-bound ledger, its pages brittle, its number neat, and its silence deafening. तो लग रहा है हम कोई बहुत अच्छा खुद का ही स्टोरी बता रहे हैं, बट अभी तक हमें पता है एक इंस्पेक्टर अरविंद राव है जो मतलब उनका बता रहा है कि उनके डेस्क पे एक लेजर है. ठीक है, उसके बाद है द केस हैड बिगन विद अ डेथ दैट लुक्ड ऑर्डिनरी. ओके, सो अभी तक हमें पता है कि ये जो केस है ये शुरू हुआ है एक डेथ से जो बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहा है. मेरे को लग रहा है आगे जाके बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स होगा क्योंकि कोई डेथ हुआ है और वो ऑर्डिनरी हो, ऐसा हो नहीं सकता. इट फील्स लाइक मैं कितना मर्डर करते आई हूँ. मैं सबको ऑर्डिनरी बताती हूँ. Chapter 1. The Death That Wasn't Loud Enough. Raghav Chetty, a well-known textile magnate, was found dead in his study at exactly 9:20 p.m. No signs of forced entry, no struggle. A glass of whiskey rested near his right hand. Okay. The official cause? Cardiac arrest. But something bothered Arvind. The clock in the study had stopped at 9:20 p.m. Interesting. And yet, the servant claimed he heard a chair fall at 9:35 p.m. What? Okay. अगर उसका डेथ 9:20 को ही हो गया तो 9:35 को सर्वेंट को कैसे सुनाई दिया कोई मतलब चेयर का आवाज? And wasn't the servant looking for his master all through the while? I mean, हाँ मतलब वो कहा था. मे बी ऐसा हो सकता है कि मे बी मतलब 2 स्टोरी हाउस हो एंड वो मास्टर ऊपर और सर्वेंट नीचे हो, ऐसा हो सकता है. लेट्स सी आगे क्या है. Chapter 2. The Family of Quiet Faces. There were 4 people in the house that night. Okay. Meera Sethi, wife, calm, composed, too composed. Kunal Sethi, son, recently returned from London, visibly anxious. Dev Malhotra, business partner, arrived for a late meeting. Ramesh, servant, the only one who reported hearing anything unusual. ओके, सो अगर इतने सारे लोग थे, चार, तो मान लो अगर सर्वेंट नीचे भी है तो बाकी 3 लोग क्यों मतलब देखा कैसे नहीं? अगर उसको कार्डियक अरेस्ट आया भी तो क्या कैसे नहीं देखा? लेट्स सी. Each had a motive, but no one had opportunity, or so it seemed. क्या मोटिव हो सकता है? क्या लगता है तेरे को? वाइफ का क्या मोटिव हो सकता है? प्रॉपर्टी हड़पना? Infidelity, you never know. और सन, वो तो लंदन से रिटर्न है, उसको क्या चाहिए अब? Let's see. देव मल्होत्रा का थोड़ा सा फिशी लग रहा है क्योंकि वो बिजनेस पार्टनर है. Maybe he wants the whole business to himself. हो सकता है. Let's. Chapter 3. The Ledger. The ledger was discovered in a locked drawer. It wasn't financial records, it was coded. Each page had dates, initials, number that didn't add up to any transaction. One entry stood out, 12 by 08 KS70. Arvind circled it. The date was 3 days before Raghav's death. Wait a minute. Arvind कौन था? Like Arvind? अरे वो इंस्पेक्टर. Oh, इंस्पेक्टर के बारे में भूल ही गई. क्या डिटेक्टिव बनेगा तू? ओके, तो इंस्पेक्टर तो एक मिनट. तो ये अरविंद ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तब अरविंद ने सर्कल किया उसके लेजर में मतलब द पर्सन हु डाइड. अच्छा, ओके. केएस could only mean one person. ये तो कुणाल से थी. His son, right? But maybe it was the date his son was returning back from London. You never know. I mean, true. Okay. Chapter 4. The glass that lied. Whiskey. The whiskey glass had fingerprints, only Raghav's. Okay, the person who died right now. But the level of alcohol in his blood suggested he had consumed less than half of what was poured. But meaning either the drink was tampered with or the glass was staged. Okay. Also, the ice in the glass had completely melted, yet the room temperature suggested it should have taken longer. Okay. Nice. मतलब अभी तक मैं कुछ भी क्लूज वो सब नहीं, इधर से उधर पॉइंट्स मार्क नहीं कर पा रही. आई एम वेरी बैड एट इट, बट लेट्स सी. Chapter 5. The Clock.
The stopped clock seemed convenient. Too convenient. Arvind exclaimed it closely. Sorry. The internal spring was intact, but a tiny metal pin had been inserted to halt the gears. This seems staged. I mean, plotted. Someone wanted the time of death to be fixed at 9:20 p.m. मुहूर्त तुरंत निकाला था क्या? But why? Why? Why do you think so? क्या लगता है तेरा? अभी तक मेरे चैप्टर 5 तक हम पढ़े, क्या तेरे को लगता है क्यों हो सकता है ऐसा? क्या सोच करके मर्डरर 9:20 को ही चाहता था कि डेथ हो? वो 9:20 को चाहता नहीं था डेथ हो. He wanted to portray as if 9:20 को डेथ हुआ है because maybe at that point of time it was convenient for him to escape or prove that he was not there, right? I mean, like मुझे पता है 9:20 मैं बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ थी ही नहीं वैसा टाइप का. So he stopped the clock at 9:20 very conveniently. करके रखिएगा थोड़ा सा. रोज का है. Chapter 6, The Missing Call. Phone records revealed something odd. At 9:18 p.m., Raghav received a call from an unknown number lasting exactly 42 seconds. No one in the house admitted to making it. And the number? It didn't exist in any telecom registry. क्या उसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे? क्या उसने बहुत फ्रॉड किया है? क्या उसने बहुत लोगों का पैसा लेकर रखा है जो उसका मारना चाहते हैं? Maybe 9:18 मतलब 2 मिनट बाद मार दिया उसको. Like literally, wow. Okay. Chapter 7, The Servant's Fear. Ramesh insisted the heard a chair fall at 9:35 p.m. But when pressed, his story shifted slightly. First he said it came from the study, then he said near the hallway. Finally he whispered, Sab, I think the sound came from inside the wall. Secret room? Wow. Okay. Let's see. Chapter 8, The Hidden Passage. See? मैंने देखा भी नहीं था नीचे. Books पढ़ने का नतीजा. Behind a bookshelf in the study, Arvind found it. A narrow passage, barely wide enough for a person. It connected the study to the guest bedroom, Dev Malhotra's room. Inside the passage, there was a single footprint, barefoot, a faint smell of antiseptic, and a small torn piece of paper. किसी को वहाँ पे hostage रखा था? The paper read, Don't trust the ledger. We had only one. हाँ मतलब ledger पे ही सब कुछ वो था. लिखा Don't trust the ledger. It is giving me like किसी ने अगर Verity पढ़ा है, not her, इसको बोल मैं थक गई, but Verity का last end में उसका manuscripts में जो भी पढ़ा उसको reference समझ आ रहा होगा. manuscripts में जो लिखा है, लेकिन last में लिखा है कि like it is all fiction and all वो मन से लिखी थी, but पता नहीं क्या हुआ था. open ending, basically open ending था. I don't think इसका open ending होने वाला है. But let's see. Chapter 9, The Sun's Secret. हाँ, Sun anxious था, तो उसका secret तो होना चाहिए. Kunal's passport showed he had arrived from London 2 days earlier than he claimed. When confronted it, he admitted he had been meeting someone in secret, a journalist, investigating his father. Why इसका father तो बड़ा. I thought he had a love interest. हाँ मुझे वैसे like journalist में हाँ why. मतलब not deviate. Detective, not matchmakers. वो अपना father पे सब रख रहा था. Oh my God. Chapter 10, The Wife's Calm. Wife बहुत calm है. लग रहा है कि उसको यही चाहिए था. Meera Sethi never cried, not once. Maybe she was like अंदर गुट रही थी, नहीं रो पा रही थी. हाँ. When Arvind asked her about the ledger, she said something peculiar. Numbers can confess if you know how to accuse them. Okay. Chapter 11, The Autopsy Detail. A second autopsy revealed trace amounts of a rare toxin. It caused delayed cardiac arrest. Symptoms appear 10-15 minutes after ingestion, which meant if Raghav died at 9:20 p.m., he must have been poisoned around 9:10 p.m. Okay. मतलब उसको जहर दिया गया था. Most probably उसको whiskey में ही जहर डाला गया था. हो सकता है. Chapter 12, The Timeline That Broke. Let's reconstruct. 9 p.m. Dev arrives. 9:05 to 9:10 p.m. Poison administered. 9:18 p.m. Mysterious phone call. 9:20 p.m. Clock stopped. Fake time of death. क्या लगता है? उसके बाद 9:35 p.m. sound heard. But here's the problem. I think the phone call was not done to Mr. Sethi. It was done to the murderer. I mean, the murderer picked up the call or like. हाँ हो सकता है क्योंकि उस crime scene में murderer होगा तो उसी ने उठाया होगा most probably. But here's the problem. At 9:05 p.m. all 4 suspects claim to have been in different rooms and no one saw anyone enter or leave the study. इतना distinct family. Chapter 13, The Ledger Code. Arvind cracked part of the ledger. The numbers weren't money, they were minutes. Each entry recorded time intervals between events. The entry 12:08 KS17 meant on August 12, Kunal had a 17-minute gap unaccounted for. Huh? Made no sense. Chapter 14, The Final Detail. One thing remained overlooked. The footprint in the hidden passage was barefoot. हाँ ये तो मैं भी सोची. But none of the suspects were barefoot that night except Raghav himself. Oh my God.
तो ये पहला पहलू था, मतलब ये सारा चैप्टर्स था, इसके बाद हमें एक एक करके हिंट्स मिलेगा। तो अभी हमें मतलब ऐसे अपना थोड़ा सा कंक्लूजन जॉइन करना होगा, पॉइंट्स ये सब जॉइन करके हमारा जो लगता है, हमें जो सस्पेक्ट है वो बताना होगा। तो क्या लगता है तेरे को? I think the servant is innocent. Majority of my suspect is, and neither the business partner. हाँ, मतलब उसके बारे में तो जिक्र ही नहीं हुआ है. But I feel मेरे को उसके बेटे पे शक है. Yeah, something is off with his son. And maybe his mother knows. हाँ, मेरे को लगता है शायद एक तो मतलब उसकी मम्मी बाय चांस फाइंड आउट कर ली होगी, लाइक कि उसका बेटा ऐसा कुछ कर रहा है एंड ऑल. Not by chance and all, but I think they were not happy. They were not a happy family, so they must have had, I mean, their reasons. I mean, not to kill someone, but हाँ. So अभी तक हमने 14 चैप्टर्स पढ़ लिया है इसका. तो क्या लगता है हमारे पास क्या क्या है? फेक टाइम ऑफ डेथ है, डिलेड पॉइजन, हिडन पैसेज, द कोडेड लेजर, द मिस्टीरियस कॉल, द शिफ्टिंग टेस्टिमनी, द बेयरफुट क्लू, द मेल्टिंग आइस. तो क्या लगता है कौन मारा होगा राघव सेठी को? आई थिंक हिज सन एज ऑफ नाउ. मुझे भी उसका बेटा ही लग रहा है. क्या नाम था? कुणाल सेठी, है ना? लेट्स सी, हमारे पास कुछ हिंट्स है, ठीक है? तो हम अगर हिंट्स में से और देखते हैं कि हमारा थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है? सो लेट्स सी. लेवल 1 ओरिएंटेशन, वेरी सटल. The time of death, 9:20 p.m. is not real, of course. Treat it as a planned constraint. Okay. True, that I know. The poison acts with delay. This is central, not incidental, of course. The ledger is not straightforward evidence. It encodes truth and misdirection. ये तो पहला वाला तो मतलब इसने डिकोड किया ही था कि like time of death is fake and all, and poison का भी. हाँ. Level 2, timeline fracture. Focus on 9:05 to 9:10 p.m. the actual poisoning window. Everyone claims isolation during that window. That's statistically unlikely. Bola. The sound at 9:35 is not random. It aligns with something physiological. अगर if 9:20 को उसका डेथ फेक है तो मे बी ही वाज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ दैट पॉइजन, फिर उसकी वजह से वो ऐसे चेयर पे हाथ मार दिया, गिर गया एंड उससे आवाज आया, देन जब तक वो सर्वेंट पहुंचा तब तक ही डाइड. पॉसिबल. Level 3, physical evidence. The whiskey glass, fingerprints is equal to only Raghav. Alcohol consumed, less than poured. Ask, was the poison even in the whiskey? Very much possible. The melting ice indicates the drink sat untouched longer than claimed. Suggests staging after death. True. थोड़ा ऐसे uncover हो रहा है. Level 4, the hidden passage. The passage connects study to guest room. देव उसका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर. ओके. अच्छा, हाँ इसका बिजनेस पार्टनर के बारे में तो ओके. But they never mentioned कि Dave used to stay in the guest room or something. But anyways, only one barefoot print was found. Ask, why only one? True. Why barefoot? Why no return print? Good question. Level 5, behavioral science. Meera, her statement about numbers is not philosophical, it's literal. Kunal, his lie about arrival is important, but not for the obvious reason. Ramesh, his shifting story isn't purely lying. It reflects confusion. He was too startled to say anything वैसा वाला. Level 6, the call. Critical pivot. The 9:18 p.m. call lasts 42 seconds. It occurs after poisoning, but before staged death time. The number doesn't exist. Implies either a masked internal system or the call is not what it appears to be. Ask, who benefits from Raghav being alive at 9:18 p.m.? इसमें कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए था. That is what I'm thinking. 9:18 if Raghav is alive. कुछ ऐसा बिजनेस डील या फिर कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के मे बी अगर उसका पार्टनर ने ये सब किया है तो जैसे कि मैंने बोला, हिज पार्टनर वांट्स एवरीथिंग, ऑल द बिजनेस टू हिमसेल्फ, तो क्या उस चीज़ के लिए कैन पॉसिबल. ओके. Level 7, the ledger, decoding layer. Entries track time gaps, not money. KS 17, someone has unobserved time. But the ledger says, don't trust the ledger. मुझे लगता है जब भी ऐसा कुछ बोले कि इसमें लिखा हुआ है और उसको ट्रस्ट नहीं करना तो उस पर ही ट्रस्ट करना चाहिए 100%. Conclusion, some entries are deliberately falsified to frame someone. Possible. Level 8, the barefoot paradox. Only Raghav is known to be barefoot. But a dead man cannot walk through a passage. That is true. So either the footprint timing is misinterpreted or someone engineered the scene to imply movement. हो सकता है. Level 9, physiological insight.
Poison causes death 10 to 15 minutes after ingestion. That aligns more closely with 9:20 to 9:25 p.m. collapse. So 9:05 में poison दिया गया था. The 9:35 sound may correspond to delayed body movement, secondary collapse, object fall that you mentioned, right? Level 10, near solution, major push. Ask yourself, who had controlled access without leaving obvious traces? देव. I guess देव, क्योंकि अगर मतलब स्टडी से गेस्ट रूम तक पैसेज था और सिर्फ देव का ही मतलब देव रहता था उस गेस्ट रूम में, तो उसी के पास एक्सेस था ये सब करने का. Who had knowledge of timing, poison and staging? क्या लगता है? अब पता नहीं क्यों कुणाल से डेविएट होके देव पे चला गया है. देव. Who benefits from fake timeline, a misleading ledger, suspicion split across multiple people? मुझे सच में लग रहा है कि अब देव है. Me too. देव. And most importantly, who is never directly contradicted by physical evidence? समझ आया अभी भी. मतलब आई एम नॉट वेरी वो क्लियर कि देव ही है, मतलब लेकिन बट एवरीथिंग अलाइंस टू देव कि वही कर सकता है ये सब. सो डू यू वांट अनदर हिंट या फिर सीधा सोल्यूशन जाना चाहेगी? What do you feel we should do? मुझे लगता है कि जितना ये सब पॉइंट्स बोला गया है बहुत ज्यादा दोनों का ही पॉजिटिव वही है कि देव ही है, क्योंकि अब इसके और आगे ना वाइफ ना सर्वेंट, और कुणाल के लिए पहले सस्पेशन था बट अब तो वो सस्पेशन भी चला गया. मेरे को लगता है कि हमें सोल्यूशन देखना चाहिए अब, क्योंकि आई गेस वी मास्टर्ड इट. अगर हम सही है तो प्लीज कमेंट बिलो आपका क्या मतलब राय था. I thought she was going to say कि अपने प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आए. नहीं बताना. प्लीज डोंट. हम इतने भी माहिर नहीं है. सो लेट्स सी द सोल्यूशन नाउ कि हम सही थे कि नहीं. लेट्स ओपन द सोल्यूशन. कहाँ क्या What? जिसके बारे में सोचे ही नहीं थे वो किलर है. मतलब सोचा था एक बार भी इस पर सस्पेशन करने का? नहीं. Okay, बता दो दे कौन है. द वाइफ मीरा सेठी. Okay, let's see how was it done. Okay. Poisoning the real crime. Meera had direct natural access to Raghav before 9:10 p.m. She administered the toxin, not in the whiskey, but earlier, most plausibly in food, medicine, or a prior drink. Okay, this bypasses the glass evidence entirely. True. This explains why the whiskey glass is clean. Only Raghav's prints, alcohol consumption doesn't match. It was staged later, letting the poison work. The toxin causes delayed cardiac arrest. Raghav collapses naturally around 9:20 to 9:25. No struggle, no intrusion, no witnesses. Scene manipulation, the real intelligence. After Raghav collapses, Meera stops the clock at 9:20 p.m., fixes a false time of death, stages the whiskey glass, creates a misleading last action, leaving the room appearing undisturbed. She shifts the investigation from who poisoned to who was present at 9:20. The 9:18 p.m. call, critical deception. The call is not external, it's likely staged or triggered to suggest Raghav was alive and interacting. Insert a false anchor point in the timeline. This reinforces the fake narrative. Okay. The ledger, psychological misdirection. Meera understands the ledger deeply. She ensures some entries are true to build credibility, some are false to redirect suspicion, especially towards Kunal. कैसी माँ है अपने बेटे हाँ, को वही। वो कर रही है. मतलब अगर ये उसके बिजनेस पार्टनर पे भी पूरा वो करती तो भी मैं मान लेती, बट अपने बेटे पे कर रही थी. शी अगर उसको नहीं रहना था उन लोगों के साथ निकल जाती, डिवोर्स ले लेती. That's why the note says, don't trust the ledger. It was a weaponized document. Okay. The hidden passage, a planted distraction. The passage exists, but Meera never uses it. Evidence inside, barefoot print, torn note. These are deliberately placed or manipulated clues. हाँ मतलब पहले से ही लग रहा था कि वो जानबूझ के ही बनाया गया. कौन एक footprint. Purpose, to implicate Dev, whose room connects there, to introduce unnecessary complexity. बहुत चालाक थी यार. बट आपका बिजनेस पार्टनर क्यों आपके घर में रहता है? हाँ मतलब ठीक है. 7. The 9:35 p.m. sound. Natural, not criminal. हाँ ये तो body Ramesh hears a sound later. This is likely delayed body slump or furniture shifting post collapse. This confusion is genuine, not deceit. Why Meera succeeds? She is the only one who has constant access without suspicion, shows unnatural composure, understands numbers and narrative manipulation, never relies on risky movement like the passage, creates a scenario where everyone looks slightly guilty. No single narrative feels complete. Final insight. This was not a crime of opportunity, it was a crime of control. Control of time, control of evidence, control of perception. The core trick. You were meant to chase movement, entry, opportunity. But the real solution required recognizing the killer never needed to enter the crime scene at the crucial moment because she had already been there. Okay.
नेवर एक्सपेक्टेड इट, मतलब इतना ज़्यादा बहुत ही अच्छे से मीरा ने ट्रिक किया हमें भी, क्योंकि हमने पहले कुणाल पे सस्पिशन डाला, फिर हमने देव पे सस्पिशन डाला जैसा वो चाहती थी। सो इट वाज़ वेरी हाईली, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं और। I mean, the only point where I could say कि हाँ थोड़ी सस लग रही है was कि she was very calm and composed. बट वो भी अगर मैं मानती हूँ, क्योंकि किसी किसी का होता है कि वो लोग एकदम शॉक में दे शो नो इमोशंस वैसा वाला, तो इट वाज लाइक कि हाँ मे बी वो अपना साइकोलॉजिकल वे में वैसा कोप अप करने के लिए कर रही थी, बट इट वाज नॉट वो कि लाइक वो ही मारी है। कि क्या ऐसा रीजन हो सकता है कि वो अपने पति को मारना चाहती थी, मतलब ये तो नहीं बताया इसमें। वही मतलब भाई, अगर तुमको नहीं रहना, क्योंकि क्लियरली अगर एक होता है ना जैसे कि लाइक कि उसको सिर्फ अपने हस्बैंड से ही वो था, तो अपने वो सन पे वो सस्पिशन नहीं क्रिएट किया, होता है ना कि मेरे बच्चे पे कुछ नहीं होना चाहिए, बट उसने तो कुणाल पे भी सस्पिशन डाला और चलो पार्टनर पे तो डाला, लेकिन मेरे को लगता है शायद उसने वैसा किया क्योंकि फिर पूरा सस्पिशन देव पे आ जाता, तो फिर वो बहुत ज्यादा वो हो जाता, उसको सबको मिसलीड करना था डिफरेंट डिफरेंट उसके साथ, मे बी इसीलिए। बट द फैक्ट इज कि उसका बेटा क्यों उस पे एक तो वो कर रहा था इन्वेस्टिगेशन, मेरे को लगता है दैट मैन राघव वाज वेरी फ्रॉड टाइप ऑफ मैन। उसका बेटा भी उस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसकी वाइफ उसको मारना चाहती है, एंड देव का पता नहीं, मे बी देव वाज गेनिंग प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट्स फॉर व्हाट ही वाज डूइंग, इसलिए वो कुछ नहीं करना चाहता था। But anyways, these are all secondary points and stories. But it was fun. I mean, it was fun. I guess you would all like to know कि हम कहाँ से इसे कर रहे थे, तो we just went to ChatGPT and added a prompt कि like हमें एक अच्छा सा बिग बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्टोरी और डिटेक्टिव वाला उसमें से लिख के देने, तो उसमें वो दे देगा, ऐसा पहला तो स्टोरी देगा, इफ यू वांट क्लूज यू कैन आस्क फॉर क्लूज एज वेल, तो वैसे ही हमने किया है, ठीक है। तो दिस वाज वेरी हार्ड वाला, मैंने बहुत ही हार्ड वाला चूज किया था, कॉम्प्लेक्स वाला जो क्लियरली हार्ड था क्योंकि हमने नहीं क्रैक कर पाया, तो इट वाज वेरी नाइस प्लेइंग दिस गेम। सो और भी ऐसे ऐसे गेम्स के साथ हम आएंगे, तो प्लीज टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज टू फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल, इट्स आदि 2512। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, टिल देन बाय bye.